Yes, this is the end. Anyway, I have to explain first. Yes. So let us explain the Ricardian theory of rent. Yes, say? Huh? Oh God, you people are crazy. You don't write. ठीक है? Productivity of the soil लिखिए. क्या ये दिमाग sick है क्या? Yes, नहीं. 3 times 3 boys have asked. Are you sick? Are you sick? Actually, there is nothing. If you are so obsessed with the fertility word, do not write it. ऐसा भी क्या है? पढ़े लिखे इंसान है तो पढ़े लिखे की तरह बिहेव कीजिए. एकदम संकुचित विचारधारा जैसा नहीं बिहेव कीजिए. या enough. Now listen. David Ricardo has given his rent theory, which is known as the Ricardian theory of rent. Okay. Perfect competition is assumed. Perfect competition is assumed. What else is assumed? There is diminishing marginal productivity. The law of diminishing marginal productivity is also assumed. And the law is what? This law states that as you go on cultivating a land, ultimately in the what you say, ultimately मतलब है कि अंत में ultimately its marginal productivity will decline. I repeat, in very short, in very brief, yes, come. In very brief, the law of diminishing returns states that as you go on cultivating cultivating a land, ultimately the productivity declines. Therefore, when the productivity is less, the other word will be returns is less. Productivity is ultimately the returns, no. So you can use the word interchangeably. There are differences in the quality of the soil. This also has been an assumption that all soil are not of the same quality. They differ in the quality. Some are superior, some are inferior, some are rather very inferior. Okay. Now how to explain this particular, the theory of rent. Suppose there are people who are David Ricardo, they have given that there are people who approach a particular new plot of land. Okay. And then they want to settle on that plot of land. First of all, they will choose the best quality of the land. हाँ, अब और कोई नहीं है, I hope. First they choose, listen here. First they choose the best quality of land, say plot A, and then they settle over there. They settle over there, they are cultivating the land, and suppose on plot A, they are able to raise 40 quintal of wheat. 40 quintal of wheat. That is okay. Now population goes on increasing and increasing. And when population goes on, increasing, then there is demand for agricultural produce. When there is a continuous rise in the population, there is a rise in the demand for agriculture produce as well. Now plot A has been exhausted. Point A has been totally utilized. And when plot A has been utilized, there is no other way, there is no other option but to go to plot B. Okay. Now what we see is plot B land is comparatively inferior to plot A. But anyway, people settle over there and there also cultivation takes place. When there the cultivation takes place, then suppose because this plot B is comparatively inferior to plot A, so only
So only 30 quintal of wheat is produced. I repeat, because plot B is comparatively inferior to plot A, so their cultivation takes place. 30 quintal of wheat is produced. 30 is less than 40, 10 units less, but there is cultivation. Now what happens? Plot B is also exhausted. Continuous use of land and the population goes on rising, and there is there is surge in the demand for agricultural produce, and plot B is also totally utilized. Now you move to which particular land? C land. C is compared to A and compared to B the least superior, or in other words you can say it is a poor quality of land. It is an inferior quality of land. Now but there is a demand for more of produce and there is rise in the population continuously. Hence plot C is also taken for cultivation. When plot C is taken for cultivation, then the productivity over here on plot is 20 quintal of wheat only. How much? 20 quintal of wheat only. Now see, first it was 40, then it was 30, then it is 20. Because plot A is the best, the next less superior, and the last is inferior. Now what about the cost of production? The cost of production, the price will be the same. This much is the price. Okay, the price will remain the same irrespective, I mean the labor which you are employing and the input which you are using. So the cost of production is the same. Price is given. Now when the price is given, what we see is that suppose each one of them, whether the wheat was produced on plot A or plot B or plot C, ठीक है, each one of them are sold at rupee 10, isn't that so? So what you say, on plot A you will be able to get a return of rupees how much? 40 into 10, 400. Yes. On the next 300, and the last less than even that. So what you see is that here there will be what you say, cropping above, rise in where were you? There will be rise in the rent. Yes, rise, and there will be emergence of the rent. There will be silence here. There will be emergence of rent on plot A as well as on plot B, but there will be no rent, no economic rent arising on plot C. This is a no rent land. On the marginal land, marginal means the last unit of land, there is no emergence of economic rent. Why there is no emergence of economic rent? Still easier I explain that suppose, the cost of production is 20 and the price is also, the cost of production, so the price remains 20 and what else remains 20? The yield is also 20 quintal. I mean there is a equality. ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि whatever you are able to produce and sell in the market, that is the return which you are getting also. I repeat this, okay? Rather I suppose it is make it 50, then it will be even better. 20 का difference है इधर. See child. Plot A, the best quality of land, has suppose 50 quintal, next 30 and then 20. Cost of production is 20. Cost of production is 20. It means the labor and other input, they will cost you rupees 20 and the cost is the same. Price remains the same. Price remains the same. And
with an earning over here from 50 quintal of wheat, you are able to cover the cost of production of 20 rupees, and 30 rupees is the emergence of economic rent. Plot B, which is comparatively inferior to plot A, there is suppose 30 quintal. Therefore, you are able to earn a rent worth 10. Why? Because the cost of production is only 20. I mean, with the 20 rupee of a price, you are able to cover the cost of labor input and other raw material input. So there is an emergence of 10, which is the economic rent. Whereas on the plot C, the price is also 20, and therefore you are earning also worth 20. 20 के बाद प्राइस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 200 हो गया, 300 हो गया and 500 हो गया. Yes, I have not multiplied with the price. Make it 10, 10, 10. Quantity into price. ठीक है? So what we see that if 200 was utilized as labor input, through the price you have been able to cover that much only. There is nothing like surplus. There is nothing like, therefore it is also said that rent is differential surplus, which arises due to difference in the quality of the land. I have not written over here, but it can arise due to locational factor also. Locational factor means that some land are better located and some are located at places which are not so very convenient. So that which is located in not so convenient place will have no economic rent, and those which are located at convenient place are favorable, are preferable. Therefore, there will arise an economic rent due to locational factor as well. Now I discuss in this class has that habit, I mean, coming at any time, going at any time. Either to be strict and disallow, that is the better option, or you will be more adjusting, so this will happen. Okay, now अब हिंदी में इसको बताते हैं पूरा, ठीक है? हाँ मैम, यस आई अंडरस्टैंड, डजंट मैटर. हम लोग डेविड रिकार्डो द्वारा फॉर्मुलेट की गई रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट का स्टडी आज कर रहे हैं. रेंट अराइजेज ऑन लैंड. रेंट अराइजेज ऑन लैंड मतलब जैसे लैंड अर्न्स रेंट, sit fast, बैठिए. Silence here. Yes. The factors of production: land earns rent, labor earns wages, capitalist earns rate of interest, and the profit is the reward of entrepreneur. हम लोगों ने रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट को स्टडी किया. रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट यह बतलाती है कि लास्ट बेंच, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट यह सिखलाती है कि रेंट अराइज इसलिए करता है क्योंकि जो सॉइल है, जो भूमि है, उसमें कुछ ओरिजिनल और इनडेस्ट्रक्टिबल, मतलब उस भूमि की क्वालिटी, उस भूमि की गुणवत्ता के चलते रेंट अराइज करता है. कुछ भूमि का क्या कहिए, प्लॉट इस प्रकार का है जिसकी उत्पादकता या कहिए जिसकी गुणवत्ता बेहतर है, बेस्ट है, उत्तम है, परंतु कुछ प्लॉट ऑफ लैंड है जिनकी गुणवत्ता तुलनात्मक दृष्टिकोण से इंफीरियर है. तो जिस पर्टिकुलर लैंड की गुणवत्ता सबसे अच्छी होती है वह अधिक से अधिक इकोनॉमिक रेंट प्राप्त करता है, और जिसकी कम होती है उसकी उस पर रेंट अराइज नहीं करता है. और जो बहुत इंफीरियर लैंड है, जिसको कहिएगा मार्जिनल यूनिट ऑफ लैंड, जो सबसे आखिर में कल्टीवेशन के लिए ली जाती हैं,
और जिसमें जो प्राइस है उसके आई मीन द प्राइस या रिटर्न कह सकते हैं, हाँ, इतना ही है जो कि उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कवर कर सकता है। तो मैंने 2 रुपया प्राप्त किया और 2 रुपया ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, तो कोई सरप्लस नहीं हुआ। टू टू कट जीरो जीरो, सो देयर इज नो राइज इन इकोनॉमिक रेंट ऑन द लीस्ट या कहिए इंफीरियर क्वालिटी ऑफ लैंड। हैव यू अंडरस्टूड दिस मच? अब इनके अजम्पशन है कि डेविड रिकार्डो ने परफेक्ट कंपटीशन को अज्यूम किया है, तो जितने भी परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स हैं वो इस पर एप्लीकेबल अर्थात लागू होंगे। डेविड रिकार्डो ने ये भी अज्यूम किया है कि इस पर्टिकुलर प्लॉट ऑफ लैंड पर लॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स अप्लाई करता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, यस सर। मैम जैसे बोले जो जिस जमीन का गुणवत्ता मतलब कि जिसका उपजाऊ है उसको मैम पैसा मतलब रेंट होता है, ज़्यादा रेंट होता है उसमें। जिसका मैम जो उपजाऊ नहीं उसको तो मैम लीज पर ही देते तो रेंट होता है। हाँ, उस क्या उस पर मैं जैसे जमीन है मेरा लीज पर दिया तो उस पर से भी रेंट तो मैम अच्छा खासा रेंट लीज अलग चीज हुई। लीज अलग है, बटाई अलग है, और ये यहाँ पर रेंट ही था मैम, किसी तरह से रेंट आना चाहिए। किसी तरह से रेंट आने की क्या बात है? रेंट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड। आपने जो लैंड लीज किया उसकी भी तो कुछ प्रोडक्टिविटी होगी, तो उसके लिए उसको रेंट मिल रहा है। जैसे गांव में मैम जमीन है तो उसको मैम दिया तो उसमें मैम गेहूं के उगा रहे हैं और कुछ ले रहे हैं, वो हो गया उधर। मैम शहर में जमीन है तो हम मैम उसको दे रहे हैं लीज पे, तो रेंट उसके बदले मैम हमको मिल रहा है ना मैम, अभी तो मैम रेंट आ रहा है उससे भी अच्छा खासा रेंट आ रहा है हमको। So you are the landlord, you are earning the rent. अब listen, don't go haywire. बैठिए और पढ़ने का ग्रहण कीजिए। Of course yes, land will earn a rent. आप फ्लैट आपके पास 4 हैं और आपने उसको दे दिया किसी किराएदार को, तो डेफिनेटली यू विल अर्न अ रेंट, डेफिनेटली यू विल अर्न। रेंट इज द रिवॉर्ड, रेंट तो रिवॉर्ड है लैंड पर। परंतु जो हम लोग अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं रेंट की थ्योरी, तो एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड में इस थ्योरी को डेवलप किया गया है, इसलिए मैंने एग्रीकल्चर और प्लॉट ऑफ लैंड की बात की। दैट इज मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट कहती है डिमांड एंड सप्लाई, इनसे रेंट डिटरमिन होता है। ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, देयरफॉर आई हैव टेकन दिस। तो अजम्पशंस ये हो गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, परफेक्ट कंपटीशन, डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ द यस हियर, अब एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ, व्हाट द लॉ इज एक्चुअली ट्राइंग टू टीच अस। The law is actually trying to, the law is actually some of the children are most distracted, you know, deserving and the undeserving. They go and they come after half an hour, and of course if you take, the thing is that if you are adjusting you will behave like this, and if you take some disciplinary action within seconds you will be a very different personality. Yes, spare the rod and spoil the child वाली बात होती है। Of course yes. एक पर्टिकुलर आइलैंड है या प्लॉट ऑफ लैंड है और उसमें लोग आते हैं निवास करने के लिए, ठीक है, एक जत्था लोगों का आता है समूह। तो सबसे पहले सबसे उत्तम क्वालिटी ऑफ लैंड को चूज किया जाता है और वहाँ सेटल किया जाता है। वो लैंड, वो प्लॉट ऑफ लैंड ए लैंड माना गया है, ठीक है। सो पीपल सेटल ऑन प्लॉट ए लैंड पर लोग सेटल कर गए, कल्टीवेशन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वर्थ 50 क्विंटल ऑफ व्हीट का उत्पादन होता है। अब पॉपुलेशन की वृद्धि होती है और इसीलिए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की डिमांड होगी। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की डिमांड होगी तो आप प्लॉट ए को पूरी तरह से यूटिलाइज कर लिया आपने, सघन खेती की। अब प्लॉट ए पूरा यूटिलाइज हो गया है और उसमें और अधिक खेती करने का कोई स्कोप बचा ही नहीं है। तब आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप दूसरे लैंड पर जाएं। तो दूसरे लैंड को जो चूज करके उस पर कल्टीवेशन किया जा रहा है और वीट उपजाया जा रहा है,
वो ए लैंड के तुलना में इंफीरियर है, उसकी इंडिस्ट्रक्टिबल पावर्स जो है वो ए लैंड की तुलना में इंफीरियर है। देयरफॉर देयर ऑल्सो जब कल्टीवेशन हो रहा है तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी तो है, परंतु अगर ए प्लॉट पर 50 है तो दूसरे प्लॉट पर 30 ही है। अगेन द सेम स्टोरी, द सेम साइकिल गोज ऑन, और बी लैंड भी यूटिलाइज हो गया, पॉपुलेशन गोज ऑन राइजिंग, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डिमांड बढ़ती जा रही है, तब अल्टीमेटली सी प्लॉट पर जाया जा रहा है, जो सी प्लॉट सबसे कम उपजाऊ है। सी प्लॉट इंफीरियर क्वालिटी ऑफ लैंड है। अब ये जो इंफीरियर क्वालिटी ऑफ लैंड है, इस पर भी रिटर्न आएगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कल्टीवेशन से होगा, परंतु मात्र कहिए कि 20 क्विंटल ऑफ व्हीट ही प्रोड्यूस हो रहा है इंफीरियर लैंड पर। सो 50, 30 एंड 20। अब व्हाट हैज हैपनिंग इज दैट क्वांटिटी इज 50, 30, 20, इस तरह से भी देख सकते हैं, और नहीं तो क्वांटिटी इनटू प्राइस कर दीजिए, तो ईच ऑफ देम आर बीइंग सोल्ड एट द सेम प्राइस। हाँ, ऐसे भी परफेक्ट कंपटीशन है तो उसमें आप लोग याद रखिए प्राइस इज यूनिफॉर्म। हाँ हाँ, तो प्राइस इज गिवन, प्राइस तो वही है सेम 10, 20, हाँ, जिससे आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कवर कर सकते हैं। परंतु ए प्लॉट में अगर 500 रुपया प्राप्त हो रहा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेच के, इस पर 300 और इस पर मात्र 200, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी कर दिया तो 200, 300, 500। इसलिए ये जो रेंट है वो लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ रेंट है, क्योंकि इतना क्या है कॉस्ट, दिस इज सी सी सी, तो ये कॉस्ट कवर हो गया ना, कॉस्ट के ऊपर जो हुआ वो सरप्लस हुआ, कॉस्ट कवर हो गया। ऐसे भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे आप बनाते हैं, व्हेन यू आर एबल टू कवर द कॉस्ट व्हाट एवर इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, तो इसी तरह से इस कॉन्सेप्ट को भी समझिए कि 200 रुपये में तो कॉस्ट कवर हो गया, तो इसके ऊपर जो बाकी रहा, प्लीज डू नॉट कम, ओके, ठीक है, धन्यवाद, क्लास में कोई बात नहीं, ओके, हाँ ठीक है, ओके। सो ये 200 रुपये से आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कवर कर लिया, 200 रुपये ही इसका रिटर्न हुआ, इसकी अर्निंग हुई, और वो 200 यूटिलाइज हो गया लेबर और अदर इनपुट्स के लिए, तो सरप्लस कितना हुआ इस बार, 0। सो दैट दिस इज नो रेंट लैंड, इसलिए कहा जाएगा देयर इज नो, दिस इज अ नो रेंट लैंड, देयर इज नो इमर्जेंस ऑफ रेंट एट ऑल ऑन द मार्जिनल लैंड। मार्जिनल लैंड पर कोई रेंट अराइज नहीं करता है, बट बी पर 200 रुपीज से कॉस्ट कवर किया गया, 300 अर्निंग है, तो देयर इज एन इमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक रेंट हियर, और यहाँ 500 अर्निंग है और 200 में कॉस्ट कवर कर लिया, तो हियर ऑल्सो देयर इज इमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक रेंट। Is it understandable? Okay, so this is how David Ricardo has explained that it is due to the difference in the quality of the soil that rent emerges, and so the rent is paid for the original and indestructible powers of the soil. Have you understood this? Yes. कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। नहीं। Can I move to another topic? Can I? Yes. You have the patience? ठीक है। Rent, wages, interest and profit मैंने डिस्कस किया है, नाइस थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी थ्योरी। क्या हुआ? ओके। I discuss rate of interest, then I will go to, tomorrow I will cover wages also, ठीक है? Yes. Okay, as the time permits,
I discuss, at least I begin to discuss the rate of interest theory, which is known as ओके बस यहाँ तक। Yes. Interest is reward for parting with liquidity. इसको तो बाद में समझेंगे। डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी, ये पर्टिकुलर लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज डेवलप्ड बाय लॉर्ड J.M. कीन्स, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। और इन्होंने क्या कहा कि देयर इज ऑन द वन हैंड डिमांड फॉर मनी एंड ऑन द अदर हैंड सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी इज गवर्न्ड बाय द monetary authority. Yes. Demand for money on the one hand, on the other hand, supply of money. Supply of money is governed by the monetary authority, and demand for money is made, money is held by people under three motives. First is the transaction motive, second is precautionary motive, third speculative motive. See, transaction. Okay, write down, then I explain. Transaction motive. Transaction motive means what? You are earning your salary on a particular day, but you have this transaction business going throughout the month. Therefore, money is kept as liquid. Money is kept as cash, as liquid, so that you are able to honor all these transactions. The more money if you have, the more money, it means the more income if you will have, you will be able to keep more of money under transaction motive. The larger your income, the more money will be held under transaction motive. I repeat,
इन हिंदी ऑल्सो आई राधा एक्सप्लेन, तो ज़्यादा जल्दी ये प्रोग्रेस होगा। देखिए कीन्स ने ये थ्योरी दी, इस थ्योरी का नाम है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें एक तरफ है डिमांड फॉर मनी, एक तरफ है सप्लाई ऑफ मनी। डिमांड फॉर मनी, लोग पैसे को क्यों मतलब अपने पास रखते हैं, इसका तीन उद्देश्य होता है, तीन मोटिव होता है। एक मोटिव होता है ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव का अर्थ है कि कीन्स ने इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि आप जो सैलरी है, वेजेस है, जो भी है, सैलरी जो आप प्राप्त करते हैं वो आप एक दिन प्राप्त करते हैं, परंतु पूरी मंथ में आपको अनेक आवश्यकताओं के लिए पैसे के जरूरत होती है। ट्रांजैक्शन, आप न्यूज़पेपर वाला है या एनीथिंग यू आर गोइंग टू बाय फ्रॉम द मार्केट, सो यू नीड मनी ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए, सेल ऑफ डिफरेंट गुड्स, सेल ऑफ डिफरेंट सर्विसेज के लिए। सिट प्रॉपर्ली चाइल्ड, आर यू सिट? But this sit properly. Why are you sleeping in the class? Now listen. Yes. Let me explain and utilize the time. तो मनी जो ट्रांजैक्शन के लिए रखी जाती है यह इनकम इलास्टिक होती है। क्या होती है? इनकम इलास्टिक। इनकम इलास्टिक का अर्थ है कि इन इलास्टिसिटी मतलब रिस्पॉन्स टू चेंजेस। इनकम इलास्टिक का अर्थ यह हुआ कि अगर इनकम में वृद्धि होगी तो ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए ज़्यादा पैसा रखा जाएगा, और अगर इनकम में ह्रास होगा, फॉल होगा, तो डिमांड फॉर मनी ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए नेचुरली कम हो जाएगा जब इनकम ही कम है। तो इसका मतलब हुआ कि मनी हेल्ड अंडर transaction motive is a function of y. MT is a transaction motive के लिए जो पर्पस के लिए पैसा रखा जाता है वो फंक्शन है, डिपेंडेंट है लेवल ऑफ इनकम पर। प्रिकॉशनरी मोटिव होता है कि हर वक्त आपकी एक परिस्थिति नहीं रहेगी, एंड देयरफॉर टाइम विल चेंज, यू विल ग्रो ओल्ड और यू विल ग्रो अनफिट, और तब आप अर्निंग नहीं कर पाएंगे। बट एवरीवन वांट्स टू कीप मनी अगेंस्ट अ रेनी डे, यानी कि जब आप उतने पोजीशन पे नहीं हैं काम करने के लिए, परंतु आपको पैसे की तो कुछ आवश्यकता होनी ही है, तो ये प्रिकॉशन है कि व्हेन आई विल ग्रो ओल्ड आई विल नॉट बी एबल टू अर्न, तो इसके लिए भी पैसा रखा जाता है। तो इसके लिए जो पैसा रखा जाता है ये कहा जाता है प्रिकॉशनरी। प्रिकॉशन, यू अंडरस्टैंड? तो प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए भी पैसा रखा जाता है, और यह भी हमारी आय पर आधारित होता है। इफ आई हैव मोर ऑफ इनकम आई विल कीप मोर ऑफ मनी अंडर प्रिकॉशनरी मोटिव, और अगर मेरे पास कम इनकम है तो मैं कम पैसा प्रिकॉशनरी मोटिव के अंदर रखूंगी। सो P is also a function of Y. ये दोनों लेवल ऑफ इनकम पर डिपेंडेंट होता है। अब स्पेकुलेटिव मोटिव क्या होता है? स्पेकुलेशन हिंदी में जैसे कहते हैं ना, गेस वर्क है, सट्टाबाजी, स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जो पैसा रखा जाता है वो मनी हेल्ड अंडर स्पेकुलेशन मतलब समझते हैं, हम स्पेकुलेट करते हैं कि कल क्या होगा, ठीक है? जैसे कहेंगे कि आई एम स्पेकुलेटिंग कि कल वर्षा होगी। अब ये तो गेस वर्क है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, परंतु मैं गेस वर्क करती हूँ, अंदाज लगाती हूँ। तो स्पेकुलेशन किया जाता है बॉन्ड मार्केट में, सिक्योरिटी मार्केट में। अब ये किस चीज़ पर डिपेंडेंट है? स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए आप कितना पैसा लिक्विड यानी कि कैश यानी तरल रूप में आप रखेंगे, ये डिपेंडेंट किस पर है, इसे हम लोग समझते हैं। डिमांड फॉर मनी को का ही ये पार्ट है, डिस्कस करते हैं।
Yes, here. Rate of interest, and on this axis you have demand for money held under speculative purpose या speculative motive. Downward sloping है और यहाँ पर perfectly elastic curve हो गया है. Are you understanding? ये और इस पोर्शन को लिखे हैं liquidity trap. Please listen and let me explain. Okay, you draw the diagram. देखिए bond market है, higher rate of interest पर क्या लिखिए लिक्विडिटी प्रेफरेंस हाँ सी चिल्ड्रन मैम ये क्या लिखिए लिक्विडिटी ट्रैप लिखे हैं वहाँ पे. देखिए जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है ना तो देयर विल बी लेस डिमांड फॉर मनी टू बी केप्ट एज कैश अंडर स्पेकुलेटिव मोटिव. जब रेट ऑफ इंटरेस्ट एक रिवॉर्ड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवॉर्ड है कैपिटलिस्ट को. तब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट R3 है तब आप कम से कम पैसा तरल रूप में, कैश के रूप में, लिक्विड के रूप में आप अपने हाथों में रखेंगे. किस लिए? सट्टाबाजी, स्पेकुलेशन के लिए. क्यों? क्योंकि आप इन्वेस्ट कर देंगे अपने पैसे को. क्यों इन्वेस्ट करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में, स्टॉक मार्केट में हाई है तो आपको फायदा है क्योंकि आपका रिवॉर्ड हाई है. सो एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हाट यू सी, एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेस मनी विल बी केप्ट अंडर स्पेकुलेटिव मोटिव. और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 हो गया तो ON अमाउंट ऑफ मनी रखा जा रहा है. जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर करके R2 हो गया तो मोर ऑफ मनी कैश के रूप में रखा जा रहा है स्पेकुलेशन पर्पस के लिए. और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे भी कम हो गया R1 तो और अधिक OQ वॉल्यूम ऑफ मनी अंडर स्पेकुलेटिव मोटिव कैश के रूप में रखा जा रहा है. और लास्ट में मान लीजिए कि R1 से भी कम हो गया तो ये पोर्शन हमने ड्रॉ किया है, ये परफेक्टली इलास्टिक पोर्शन है इस कर्व का. व्हाट इट इज? परफेक्टली इलास्टिक. परफेक्टली इलास्टिक ये वो होता है ना, तो ये इस तरह से हो गया हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस. लिक्विडिटी ट्रैप इसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये पोर्शन है. इस पोर्शन, यस यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. आप कहें कि हम लिख रहे हैं तो ये आप लिख रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं. दिस पोर्शन which is perfectly elastic, this portion of speculative demand curve which is perfectly elastic is liquidity trap. इसका मतलब क्या है कि इस समय लोग सारा पैसा अपने हाथों में ही रखेंगे और इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना फॉल कर गया है, इतना गिर चुका है कि लोगों को उम्मीद है कि इससे ज़्यादा नहीं गिर सकता है. रेट ऑफ इंटरेस्ट एकदम लो है, कोई रिवॉर्ड वाली बात नहीं है. तो इसमें बेहतर है कि हम लोग स्पेकुलेशन के लिए अधिक से अधिक पैसा अपने हाथों में तरल रूप में रखें और ये एक्सपेक्टेशन से कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कल ऊंचा जाएगा तब फिर हम लोग इस पर इन्वेस्ट करेंगे एंड वी विल अर्न अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. इसलिए मनी हेल्ड अंडर स्पेकुलेटिव मोटिव इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इट हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, मनी हेल्ड अंडर interest is a function of money held under speculative demand is inversely
इनवर्स मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक होगा तो मनी हेल्ड अंडर स्पेकुलेटिव पर्पस कम हो जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा तो देयर विल बी मोर मनी हेल्ड अंडर स्पेकुलेटिव मोटिव. ठीक है, मनी हेल्ड अंडर, यस, money held under speculative motive is influenced by the rate of interest and there is an inverse relationship between the two, दोनों में. अब ये तो डिमांड फॉर मनी की बात हो गई. अब आता है सप्लाई ऑफ मनी. मैंने शुरू में ही लिखा कि सप्लाई ऑफ मनी इज गवर्न्ड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी. जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी सप्लाई ऑफ मनी का. कैन आई रब द बोट? यस मैम. ओके, it's already time. क्या? हाँ, अटेंडेंस तो लेना ही है. यस, okay, please listen here. This much you have understood? अब आगे डिस्कस करते हैं सप्लाई ऑफ मनी. नेक्स्ट क्लास. अच्छा, बस इंट्रोड्यूस करते हैं. ओवर हो गया. सैचुरेशन पॉइंट. ठीक है, कोई बात नहीं. यस, कोई बात नहीं. Yes, be attentive and give your what is the total strength of the class today? 47. 47 have written. Okay, yes, now give your attendance. Record.